మన సభ్యులందరికీ నమస్కారం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ సహదేవ్ వర్మ. ఈపీఎస్ 95 మినిమం పెన్షన్ పెంచాలని మరియు ఈపీఎస్ 95 పెన్షనర్ల ఇతర సమస్యలపై ఈ మధ్యకాలంలో పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో వివిధ పార్టీల పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడం జరిగింది. आपका ध्यान उन लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो पेंशनर हैं. ईपीएस पेंशनर 95 की सूची में बहुत लंबित मांगे उन लोगों की देश भर में चल रही है. देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बाट जोड़ रहे हैं. सभापति महोदय, इनको जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून पसीना उस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को चलाने के लिए उस मेहनत भर के पूरा जीवन भर लगाया, आज उनको पेंशन के नाम पर 200 से लेकर 3,000 रुपया मिलता है. तो उनको चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ देखनी पड़ी. जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वो न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं, न छोटी मोटी जरूरत चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई उनको लाभ मिल पाता है. मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास पेंडिंग है. इनको आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी और सामाजिक सुरक्षा की योजना से अगर जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा. जो चाहे अर्ध सरकारी नौकरी में हो, चाहे डेयरी में हो, माइनिंग में हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग में हो, इन्होंने पूरा जीवन भर निकाला है. मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और इनके परिवार को आने वाले समय की सुरक्षा मिल पाए. मैं आपकी तरफ से काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में एक न्यूज़ आई थी सर कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ़ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था. आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती कि सच है. और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज व्हाट द न्यूज़ आइटम सेड अबाउट एनपीएस इन बैंक्स. अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, इंश्योरेंस के बारे में हर किसान बोलते हैं कि फसल बीमा योजना में पैसा दिया जाए, किसानों का सुसाइड के बारे में भी अभी इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही है. अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितने शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते हैं, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए खराट साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है. लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी. दीज आर नॉट लेगेसी इशूज़, आप ठीक कर सकते थे. 8 साल बहुत टाइम होता है ठीक करने के लिए इकोनॉमी. तो ये लेगेसी इशूज़ में मत फंसाइए हमको. तो फार्मर्स लोन हो वो आप माफ़ कर सकते थे, आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते. जो इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं दिखते. लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ़ किया. वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए. इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है. दोस्तों, EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rests in peace, but Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. They are very proud of feeding 80 crore people. I am also very happy if they are feeding 80 crore people. But how come when they keep saying this multi-dimensional poverty index that this government talks about, every time they're saying we are getting people out of poverty, how come you're still after 10 years feeding 80 crore people? I mean, it's the same number. In 10 years, sir, 80 crore लोगों को, they are so proud to say they are feeding them and we are feeding them. I'm very happy if they are feeding them. Then how come nobody is going? Then this whole multi-dimensional poverty act, what is this for? They are doing nothing for EPS 95.
so much they talked about pensions. EPS 95 was a commitment this government made. I mean, I hope his soul rest in peace, but Arunji is unfortunately no more with us. But Arunji had mentioned it, that EPS 95 is something we commit to. This government hasn't done it. I just need to ask this government that they have to clearly in the reply give us what is the plan of this government. So I urge this government to kindly reply to all these questions. It's a very unique social security act in the world. It's a very big financial resources organization. It is a EPF. Sir, after 20 years, a family pension scheme was evolved in 1972. 1.16% from the employee, 1.16% from the employer, and 1.16% from the government was contributed. The worker who died while on the harness of the working time, they will be given the pension. Sir, after repeating demand, in 1995, a pension scheme was evolved. From the employer contribution, 8.33 has been taken for the pension. 1.16% was given by the government for the pension contribution. Sir, in 2014, while the UPA government, the minimum pension was increased 1,000 rupees. Subsequently, we demanded so many times. Sir, you know, even the old age pension, they are getting more than the 1,200 pension. But after 20 years, 30 years working, they are getting the very poor pension. The EPF always says there is no financial resource. I asked the government through you, sir, there are all the funds from the family pension scheme merged with the EPF. All the corpus fund of the retired employees who died after 95, their fund also merged with that. The unclaimed fund, lakh of rupees has also be there. But the government is not come forward to meet the demand of the poor retired working class. So that I request through you, sir, let the labor department as well as the finance department. ఈ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దేశంలోనే రైతులు, రైతు కూలీలు, నిరుపేదలకు, సీనియర్ సిటిజన్స్కు, బీపీఎల్ దిగువ స్థాయి కుటుంబాలకు ఆదుకుంటోందని అన్ని ప్రచార భజనలు చేస్తున్నారు. మరి అదే స్థాయి సీనియర్ సిటిజన్స్ అయి ఉండి ఈ ఈపీఎస్ 95 పెన్షన్లో అతి తక్కువ పెన్షన్తో గత 10 సంవత్సరాల నుండి బతుకులు నెట్టుకొస్తున్న ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి గుర్తు రావడం లేదా అని పార్లమెంట్ సభ్యులు పార్లమెంట్లో ప్రశ్నిస్తున్నారు. గో ఫర్ ది బెస్ట్. మరి యొక్క కొత్త సమాచార వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను.